नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दीप एडुटेक वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सेल सीट में एक रो को कैसे हम लोग ऑटो हाईलाइट करेंगे यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ड्रॉप डाउन लिस्टें। चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये एक्सेल सीट में मेरा एक मार्कशीट डेटा है। इसमें हम जो ग्रेड है, ग्रेड जब पास होगा उसमें क्या होगा, हम लोगों को इस जो रो है ये रो ग्रीन हो जाएगा, और जो रो में जो सेल में जो स्टूडेंट का ग्रेड फेल होगा उसका रो रेड हो जाएगा। कैसे? यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट द ग्रेड सेल, then go to the data tab, then go to the data validation, then click on the data validation, then click on the allow drop down list, choose the list, then write down here pass comma fail, then click on OK. Then go to the home tab, then select the all data, then click on the conditional formatting, then click on new rule, then click on use formula to determine which cells to format, then under the formula box enter equal sign, then choose the grade cell, then remove dollar sign before the cell number, then press enter equal, then open double inverted comma and write down pass, then click on format, then click on fill, then choose the green color, if then OK, then click on OK, then again, then for fail click on the go to the conditional formatting, then manage rule, then click on new rule, then again use a formula to determine the which cells to the format rules type, then enter equal sign, then select the grade cell, then remove dollar sign, then equal under the double inverted comma fail, close, then click on format, then go to the fill tab, then choose the red color, then click on OK, then again OK, then apply, then OK. Now in the grade, all grade cell in this data, the drop down list is appear. So click on the drop down list. If student is pass, click on choose the pass, and then we are shown the row is hide auto color. Fill again pass. Okay, so using this process we are create auto highlight row using conditional formatting and the drop down list
in Excel. Okay, thank you.